पीछे भी एक लॉजिक बताता हूँ भाई. These kind of setup is started by AICTE because they want that the student from as a fresher must know about the different kind of opportunities. It is possible that when he is in for final year, he may say that, oh sir, you should discuss it earlier. I really don't know about it. That's why in first year, in the beginnings, at the starting, we are here to tell you that how you generate your idea and from where you get the funds, where you collab with them and you work on that particular things what you want. Even though particular expert team will be provided to you if you want to do something better. Okay, if you want to start something in hacking, you want to serve your country as a hacker, the team will be there. They will help you. That how you upgrade your thought, how you upgrade your technology application that you have on that you are working. Is it clear? So basically what we will see today, first we'll discuss whose of these angles are. Then after tangents, what the relationship between entrepreneur and financial systems, right? Suppose you came here and tell me, sir please इस न्यूमेरिकल का मतलब मुझे समझ में नहीं. अरे दिमाग खराब है क्या, इतना भी नहीं जानते क्या तुम? Would you like to approach me again? I think no, because the answer is no as you accept it. That's why we are that entrepreneur friendly community, right? Means they are very polite person. What you want to deliver on your project, they will help you. They will also tell you that this project is not as far as our expectation level is this. You should work more, or please clarify these 2, 3 or 4 things. Means जैसे आप हवा में तीर चलाओगे तो वो आपको रोक देंगे कि नहीं मुझे ये पेपर्स की फॉर्म में चाहिए, ये वर्किंग की फॉर्म में चाहिए, किस तरह से इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है. Okay, so in today's session, basically we will know that what kind of opportunity is possible in the market and how this opportunity is work. Gentlemen, in this market only 3 kind of opportunity is possible. Means only 3 kind of idea generation is possible. First is work on existing product. Means you can say it like that, modification in you know from where this idea came. This idea came from lead generation. तुम्हें क्या लगता है ये मोबाइल्स का एप्लीकेशन क्यों डेवलप हुआ होगा, या फिर आपका जो लाइफ कंफर्ट हो रहे डे टू डे ऐसा क्यों हुआ होगा? किसी ने सोचा होगा? आपने कभी सुना होगा मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 क्लास के अंदर आवश्यकता है आविष्कार की जितनी, राइट? पहले अपन ट्यूब वाले टायर्स यूज करते थे, आज ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं. तो ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट अवेलेबल था उस प्रोडक्ट के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस किया, वर्क करा, राइट? तो फर्स्ट थिंग्स तो ये हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? बिल्कुल से न्यू कॉन्सेप्ट. न्यू कॉन्सेप्ट जनरेशन, जैसे ट्यूबलेस टायर बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था. मोटोफोन, फर्स्ट फोन्स प्रोवाइडेड बाय मोटोफोन, दे वर ऑन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स. बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट. जी ओके. देन थर्ड होता है कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी प्रोडक्ट में हमने खुद का प्रोडक्ट बना दिया. खुद का प्रोडक्ट बना दिया मीन्स
Actually, in engineering, we are not using the term product in general way. This is concept. Okay. Listen. These two things is difficult for beginners, but this is easy for beginners. You can do work on the available applications, on the available platform, but you don't copy them. Why the customer will choose your product? Can we, one example, you go for purchase ice cream, first what will say them? Okay, what's the flavor of it? ऐसे तो होता है इसके क्या पूछते हैं फ्लेवर क्या है, फिर अपन अपने दो चार ब्रांड के नाम बताते हो, भाई इसका चाहिए हमें। आपने उस ब्रांड का नाम क्यों लिया? Because there is a faith in your brain that this ice cream will be the good taste, right? Will provide you the sweetness and crunch. Then only you will go for that. So, as a beginner, it is difficult to make image. Is it yes or no? So, what will you do first? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? You will make the similar product but give the better advantage as compared to existing product. Suppose ये मार्केट से जो 5 रुपए की अवेलेबल है मार्केट में और आपने एक 5 रुपए का मार्केट बेचने का सोचा, तो याद रखना ये सेल होता है, ये लॉन्च है। तो कस्टमर आपके तीसरे मार्केट को, जो तीसरा प्रोडक्ट सपोज कोई आपका मार्केट परचेज करने से पहले सोचेगा, बिकॉज ऑलरेडी द बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय दिस टू मार्केट्स, दे आर गेटिंग बेस्ट, so they will start the benchmarking. What is the benchmarking? To compare ourselves within the best in existing class. It means if the marker is 5 rupees available, then customer will compare this 5 rupees marker with every market available at the cost of 5 rupees. And if marker is better than this, then only they will purchase it. कहने का मतलब ये बेटा कि अगर ये 5 रुपए का मार्केट अवेलेबल है मार्केट के अंदर और आपने 5 रुपए का मार्केट लॉन्च किया है, तो सबसे पहले कस्टमर बेंच मार्किंग करेगा कि 5 रुपए के रेंज में जितने मार्केट अवेलेबल है सबको चेक कर लो एक बार और फिर देखो ये मार्केट कहाँ अवेलेबल होता है, फिर वो आपके मार्केट को परचेज करेगा, राइट? मीन्स फॉर मेकिंग ट्रस्ट इन योर कस्टमर यू मोस्ट हैव टू प्रोवाइड better than existing product. Listen, हमने यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ इसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया है. What is the quality? Quality is fitness for use. हमें पता होता है I am going to purchase this water bottle in 2000 rupees. Then what our expectation is? Yes, you know. In same manner, when you start your own business, when you start your own setup, you should think 2 times, 3 times or 100 times about your product. That who will be the our competitor are, what kind of facility they are providing, what kind of quality they are giving to the customer, and how I will beat them. Don't forget the